Hello dear student, welcome to the online class of mathematics. Today is chapter 19, parallel and perpendicular lines. The first topic we will know is intersecting lines. What is intersecting line? Two lines in a plane which meet at a point are called as intersecting line. यानी दो लाइंस जो एक पॉइंट पे मिलती हैं ऐसे लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम हाउ लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू एट अ पॉइंट ओ. सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन क्या होता है? द लाइंस which lies in a same plane. आप देख सकते हैं दोनों एक ही प्लेन में हैं and which do not intersect are known as parallel line. आप देख सकते हैं ये दो लाइन कहीं भी एक जगह इंटरसेक्ट नहीं होगी. ओके, इंटरसेक्ट आपको पता ही क्या होता है इंटरसेक्ट. सो that type of lines are called as parallel line. You can see here if the line is moving then also it will not intersect at any point. So such types of lines are called as parallel lines. So here line XY is parallel to line LM. You can say that. So let us see some example which will tell you more about parallel lines. Here I have shown one diagram to you all that it's a rectangle PQRS. Okay, and we have to find out the parallel lines in the given figures. So parallel line का सिंबल क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं. पैरेलल लाइन का सिंबल होता है टू स्टैंडिंग लाइंस. ओके, ये पैरेलल्स के होते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या है. सो यू कैन सी हियर लाइन PQ and SR. these two lines are parallel lines. so we can write, आप लोगों ने ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ा था कि लाइन कैसे लिखा जाता है by using the symbols. So I can say that line PQ is parallel to line SR. Fine, you can say that. और अब दूसरा जो पैरेलल लाइन है वो है हमारा PS and QR. So you can write line PS is parallel to Q, line QR. These four parallel lines are in the given figure. तो आप लोग को समझ में आ गया किस तरह इसे आइडेंटिफाई करना है पैरेलल लाइन. आप देख सकते हो ये दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते ना, ये दोनों एक दूसरे से. सो यू कैन सी हियर लाइन PQ is parallel to SR and line PS is parallel to line QR. Okay dear student, now this is the next figure for you all. You have to identify how many parallel lines are there. This figure is a square shape, and as you all know that square has all four sides equal. So my question is, how many parallel lines are there? Absolutely correct. This diagram has four parallel lines, and what are they? Line AB is parallel to line BC, and line BC is parallel to line AD. So these are the four parallel lines in the given figure. Now we will see the next topic, that is perpendicular line. Perpendicular lines. When two lines intersect and make an angle of 90 degree, we say that the given lines are perpendicular to each other. यानी जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं, एंगल ABC. सो आप देख सकते हैं लाइन AB और BC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं because it making an angle of 90 degree. So we will call as
line AB and line BC are perpendicular to each other. Dear student, now we will see the real world parallel and perpendicular lines in real life. आपको पहचानना है, जो भी मैं पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको पहचानना है ये पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। सो आप लोग तैयार हैं? सो नाउ द फर्स्ट फिगर इज railway track. Can you identify which line is this? Yes, you're correct. It is parallel lines. Now the next picture is wall. The brick showing which line? Yes, perpendicular line. Now racetrack. Yes, absolutely correct. Parallel line. Now we will see the last picture, that is window. Here you can see two different lines and the answer is parallel and perpendicular lines. Dear student, I hope you have understood today's topic. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.